Hare Krishna. Hare Krishna, dear friends. Today we are going to recite chapter 11, part 2, which is verse 31 onwards. कल हमने चैप्टर 11 की 30 वर्सेस की थी. भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में, विश्व रूप के बारे में हमने टीचिंग्स पढ़ी भगवत गीता से. अर्जुन के रिक्वेस्ट पे भगवान ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाया. अर्जुन को डिवाइन विजन दिया भगवान ने, क्योंकि अर्जुन भगवान का डिवोटी है और अर्जुन भगवान के डिवाइन फॉर्म, यूनिवर्सल फॉर्म को देख के बहुत एस्टॉनिश्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, वंडर स्ट्रक हो गया और फिर हाथ जोड़ के भगवान को ओबेसेंसेस करते हुए प्रे करने लगा. भगवान के विश्व रूप के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए. तो आज हम वर्स 31 ऑनवर्ड पढ़ेंगे. आइए, उससे पहले हम प्रेयर्स ऑफर करेंगे. हरे कृष्णा एवरीवन. घनश्याम प्रजापति, महावीर लीला, मितुदास, दिव्या, गोपीनाथ, अशोक लाडिया, हरे कृष्णा. प्राथमेश, देबल, तक, रीना, वर्कलक्ष्मी, सिन्हा, सारिका, पिंटू, यादव, हरे कृष्णा. आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है. राजा, राहुल, एंजेला, विश्वजीत सरकार, वैद्यनाथन, पयलोर, हरि बोल. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. दिस इज द भागवत गीता, हम लोग जिससे रिसाइट कर रहे हैं. And we are on chapter 11. This month we have recited in Sanskrit and English 10 chapters and we have covered 30 verses from chapter 11. Title of chapter 11 is the Universal Form. और आइए अब देखते हैं इस चैप्टर में भी भगवान ने अर्जुन को क्या टीचिंग्स दी हैं. Because we are all following in footsteps of great acharyas, great souls like Arjun. और भगवान ने अर्जुन को टीचिंग्स जो दी हैं बैटलफील्ड में, इट इज मेंट फॉर ऑल ऑफ अस. For those of you who were not present yesterday or listened to part of the recitation, very quickly I can give a recap of chapter 12 we have covered so far. भगवान ने अर्जुन को बताया, अर्जुन ने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि ही वॉन्ट्स टू सी द यूनिवर्सल फॉर्म. और श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया इसके 2 रीज़न हैं. पहला रीज़न है कि टू कन्विंस अदर्स, पीपल लाइक अस इन कली एज टाइम्स, दैट what is the position of Krishna. Okay, it is not philosophical and theoretical, but it is a realized knowledge, and that Bhagwan is cause of all causes, sarva karan karanam. And आगे के लिए, फ्यूचर के लिए क्राइटेरिया सेट करने के लिए, फ्यूचर के इनकारनेशंस के लिए क्राइटेरिया सेट करने के लिए अर्जुन ने ये 2 रीजन से भगवान से विश्व रूप देखने के लिए रिक्वेस्ट की, द यूनिवर्सल फॉर्म. यूनिवर्सल फॉर्म के कुछ एस्पेक्ट्स बताए गए हैं. अभी तक अर्जुन ने बहुत सारी चीज़ें देखी भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म में. वो ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अनलिमिटेड फॉर्म्स हैं. इट्स अनमेजरेबल, इमेजरेबल, एंड इट वॉज सो इफल्जेंट, लाइक करोड़ों करोड़ों सूर्यों का तेज था. एवरीथिंग इन यूनिवर्स इट सीम्ड वॉज इन वन प्लेस. All the demigods, all moving and non-moving objects he could see in that universal form. And Arjun अपने ordinary vision से नहीं देख रहा था. भगवान gave him the divine vision. He could as if see all the past, present and future, and outcome of battle also he could see. So, in a way he saw the Kal Roop, the time, the eternal time, which is destroyer of all the worlds and people. और प्रभुपाद ने परपट्स में बहुत सुंदर एनालॉजीज भी दी हैं जो कि
You can read when you go through the purports, because there is tons of information and I'm just doing a recitation. I just read the Sanskrit verses followed by English translation. We are limited by time right now, so I really appreciate those of you who have been patiently joining me in recitation of Bhagavad Gita as it is. और अब हम सीखेंगे भगवान ने अर्जुन को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए अपना विश्व रूप, अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाने के बाद. अभी भी यूनिवर्सल फॉर्म के कुछ एस्पेक्ट्स हम अभी भी पढ़ेंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शंस आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर. So let's come to chapter 11, verse number 31. I hope all are doing very well. Prasannajit, Kalu Ram, Jayant Kesh, Prakash Singh, Hare Krishna. Abhijit Vishwas, Mitali, Naresh, Chandrika, Jhaman, Deval, Salo, Vijay, Ramesh, Hare Krishna. Srinivas, Ravi San, Rohit Gupta, Hari Bol. We are on verse number 31. आप में से जिनके पास भागवत गीता की कॉपी नहीं है, you can get a copy of Bhagavad Gita. You can read from online also, vedabase.io. इस ग्रुप में टाइम टू टाइम एवरी डे डिवोटीज आर शेयरिंग लिंक्स, जहाँ पे आप फॉर्म भर के एक अपनी कॉपी भगवत गीता ले सकते हैं, आपको भेजी जाएगी. प्लीज़ इस मंथ में स्पेशली देयर इज़ अ ग्रेट ड्राइव टू डिस्ट्रीब्यूट, टू शेयर द विजडम ऑफ भगवत गीता, सो प्लीज़ बेनिफिट फ्रॉम इट. टेक्स्ट 31. आख्याहि मे को भवान गुरुपो तमोस्तु ते देवर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्. Translation: O Lord of Lords. So Arjun is saying this to Lord Krishna. अर्जुन ने अपने हाथ जोड़ दिए हैं और बहुत ही विनय पूर्वक सरेंडर भाव में he is praying to Lord. He is expressing his thoughts and feelings. He is wonderstruck. He is in awe and reverence. He's saying, O Lord of Lords, so fierce of form, please tell me who you are. I offer my obeisances unto you. Please be gracious to me. You are the primeval Lord. I want to know about you, for I do not know what your mission is. Text 32, chapter 11, text 32. Shri Bhagavan Vacha. कालो अस्मि लोकक्षय कृत पल प्रविद्धो लोकास्माह तुमिह प्रवृत्त ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा. The Supreme Personality of Godhead said, Time I am, the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all the people. With the exception of you, the Pandavas, all the soldiers here on both sides will be slain. So देखिए भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को बता दिया. प्रभुपाद कहते हैं अर्जुन भगवान का मित्र था और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड उनको मान चुका था, पर फिर भी वो हैरान था, पजल्ड था, लुकिंग एट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ भगवान इन द यूनिवर्सल फॉर्म. Therefore, he is asking to Lord, he is asking to Bhagwan, what is Bhagwan's actual mission of this devastating force? So, Bhagwan says he is trying to learn the supreme truth. So, यहाँ पे टाइम की ग्लोरीज बताई गई हैं कि टाइम के आगे कुछ नहीं चलता. अर्जुन के थॉट्स और फीलिंग्स हैं. यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि टाइम इज डिस्ट्रक्शन एंड ऑल द मैनिफेस्टेशंस आर टू बी वैंक्विश्ड बाय द डिजायर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड. This is the law of nature. Text 33. Tasmat tvam utishta yaso labhasva jitva satram bhukshva rajayam samradham mayavate nihata purvamev nimit matram bhav savyasachin. Translation: भगवान ने अब अर्जुन को क्या बोला
Therefore, get up, prepare to fight and win the glory. Conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangement, and you, O Savyasachi, can be but an instrument in the fight. आपको पता है भगवान ने अर्जुन को यहाँ साव्यसाची बोला. प्रभुपाद कहते हैं इसका मतलब ये होता है, साव्यसाची का मतलब ये होता है one who can shoot arrows very expertly in the field. Thus Arjun is addressed as an expert warrior capable of delivering arrows to kill his enemies. और भगवान ने बोला just become an instrument, निमित्त मात्रम. Now this is a very important word. We should understand that the whole world is moving according to the plan of Bhagwan, and foolish people don't have sufficient knowledge, and they think that nature is moving without a plan and everything is happening with some coincidences or accidents. So there are many so-called scientists who suggest that perhaps it was like that, perhaps like it is like this, and what is the plan? So Prabhupada कहते हैं, this whole creation, this whole cosmic manifestation is an opportunity for all of us to engage in devotional service and go back home to Krishna. But so long as we have this mentality of enjoying to lord over the material nature, then what happens? We stay conditioned. Then we cannot fulfill the purpose of this rare human life. So anyone who understands the plan of Bhagwan, okay, and cultivates Krishna consciousness is most intelligent. Because the creation and destruction of cosmic manifestation are under the guidance of Bhagwan eventually, right? So thus the battle of Kurukshetra was fought according to the plan of God, and Arjun was refusing to fight. What was he told? That he should fight in accordance with the desire of Supreme Lord, according to the will of the Lord, and then he would be happy. अब ये सोचिए हमें ये कैसे पता चले हमारे लिए भगवान की क्या विल है, what is the supreme will? तो ये रिपीटेडली हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्यस ने बोला है, प्रभुपाद ने भी हर जगह अपनी बुक्स में लिखा है. क्या लिखा है? कली एज के लिए हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग is the yug dharma. That is our duty. In addition to that, we have to be kind to all living entities. We have to develop taste in chanting, and we have to serve the Vaishnavas, because it is by the blessings of the Vaishnavas that we get the blessings of Bhagwan. And in this way, we learn what is the will of the Lord. So everything we do in our daily life, if we do it to please Krishna. आज अचला माता जी का मैंने टॉक शो सुना. उसमें माता जी ने बार बार एक ही बात स्ट्रेस की. जो लोगों ने उनका वो टॉक शो अटेंड किया था वो रिमेंबर कर रहे होंगे. उन्होंने हर बार यही स्ट्रेस दिया, डू एवरीथिंग एज एन एक्ट ऑफ प्लीजिंग, somehow try to please Krishna, then automatically we will know what is the right way of doing things. So if one is in Krishna consciousness and his life is devoted to Lord's transcendental service, he is perfect. प्रभुपाद ने बार बार perfection of life पे बुक्स लिखी हैं, लेक्चर्स लिखे हैं, और उसका एक ही सिंपल रास्ता है. When one is sincerely trying to serve Krishna, please Krishna, automatically the super soul within the heart, Paramatma within the heart, helps that soul determine what they need to do, how that person should behave, how that person should conduct himself in this material world. Text 34. Dronam cha bhishmam cha jayadrattam cha karnam tatthanyanapi dvyodviran maya hatanstvam jahima veshtha yudhasva jetasi rane sampatnan. Friends, हम लोग वर्स नंबर 34 पे हैं और इस चैप्टर में 54 वर्सेस हैं. There are 20 more verses to go. Let's try to finish them in next half an hour so that you all can have a wonderful picture about the whole chapter and its final beautiful message. Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna and the other great warriors have already been destroyed by me. Therefore, kill them and do not be disturbed. Simply fight and you will vanquish your
enemies in battle. So भगवान का एक प्लान होता है सभी के लिए. अब भगवान बहुत ही काइंड एंड मर्सीफुल हैं अपने डिवोटीज़ के लिए, और वो सारस में अपने डिवोटीज़ को क्रेडिट देना चाहते हैं जो कि उनका प्लान कैरी आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ायर. Therefore, the life should therefore move in such a way that everyone acts in Krishna consciousness. किसी बात का फियर रखने का सेंस ही नहीं है, किसी बात का लेमेंटेशन और एंजाइटी रखने का सेंस ही नहीं है, क्योंकि if one understands what is the will of the Lord through the medium of a genuine guru, then one can conduct their life accordingly. And the plans of Supreme Personality of Godhead are understood by His mercy, and the plans of devotees are as good as His plans. So, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? One should follow such plans and be victorious in the struggle for existence. Text 35. Sanjay uvacha etat shruत्वा vachanam kashyavasya etat shruत्वा vachanam keshavasya कृतांजलिर्वेपामना कृतति किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सद्वंदं भीत भीत प्रणम्य. Translation. Sanjay said to Dhritarashtra, O king, after hearing these words from Supreme Personality of Godhead, the trembling Arjuna offered obeisances with folded hands again and again. He fearfully spoke to Lord Krishna in a faltering voice as follows. So yesterday I asked a question from everyone. Who are the two people who could see the universal form of Bhagwan? So one is Arjun, another is Sanjay. Sanjay was able to see this form, and he was actually seeing the whole battlefield from far away and conveying the whole commentary to Dhritarashtra. So इस वर्ष में यही फिर से बताया गया कि अर्जुन bewilderment में भगवान को प्रेयर फॉलो कर रहा है. और what is Arjun's mood here? Arjun is not as a friend offering prayers right now, but as a devotee in wonder. अर्जुन आश्चर्यचकित है. टेक्स्ट 36. अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहर्षति अनुराजयते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा. रोहित गुप्ता, स्टाइलो श्रीनु, हरे कृष्णा. Some friends have just joined and I want to welcome you all. I appreciate your time, and all are very blessed to be able to do Shravanam and reading of Srimad Bhagavatam. Hare Krishna, Ram Krishna, Animesh Nachkar, Taruna Patel, Devashish Gupta, Hari Bol. We are reading text 36 of chapter 11, the universal form. Arjun said, O master of senses, the world becomes joyful upon hearing your name, and thus everyone becomes attached to you. Although the perfected beings offer you their respectful homage, the demons are afraid and they flee here and there. All this is rightly done. आपको एक बात मैं बता दूं, इस चैप्टर में, चैप्टर 11 में भगवद गीता के जो कि टाइटल है द यूनिवर्सल फॉर्म, भगवान ने अर्जुन को रिवील कर दिया और अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया भगवान कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज एंड ही इज प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट एज सुपर सो, परमात्मा. And Arjun further knows that in spite of his being the source of all appearance and disappearance, जो भगवान के incarnations आते हैं, he is aloof from them. As the Lord has said in 9th chapter, भगवान ने 9th chapter में क्या कहा था? 9th chapter का टाइटल था परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. और उस चैप्टर में हमने जाना कि सोल की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, सोल का क्या रिलेशनशिप होता है भगवान से, भगवान की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, और सबसे प्यारी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, प्योर डिवोशनल सर्विस. उस चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को ये परम गुह्य ज्ञान दिया कि जो प्योर डिवोशनल सर्विस में एंगेज करता है वो लाइफ की सक्सेस को प्राप्त कर लेता है, उसकी लाइफ परफेक्ट हो जाती है.
उसमें भगवान ने बताया कि वो कैसे omniscient हैं, omnipotent हैं, he is all pervading, yet he is not personally present everywhere. एंड ये सब भगवान के बोलते हैं इनकंसीवेबल ऑपुलेंसेस हैं. एंड अर्जुन ने एडमिट किया ही थॉरोली अंडरस्टूड एवरीथिंग. देयरफॉर अब भगवान ने जब अर्जुन को जो डिवाइन विजन दिया है वो क्या था? वो भगवान की कृपा थी, भगवान की ग्रेस थी. और अर्जुन भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म देखना चाहता था. ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर फ्यूचर क्राइटेरिया फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. क्योंकि डिवोटीज तो भगवान का बस टू आर्म फॉर्म देखना चाहते हैं, वो उसी में ही बहुत प्लीज होते हैं और भगवान के टू आर्म फॉर्म को सर्व करना चाहते हैं. सो द डिवोटीज हु आर करेक्टली सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप विद कृष्णा आर अट्रैक्टेड बाय लविंग फीचर्स, not by the godless display of opulences. So चैप्टर 11 में अब अर्जुन जब अपनी प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं भगवान को, ओके और आपको पता है डिवोटीज हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं चाहे कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, बिकॉज डिवोटीज समझते हैं कि जो भी हो रहा है लाइफ में वो उनके भले के लिए ही हो रहा है. So now text 37. Kasmach te namarin mahatman, kasmach te namarin mahatman, gariyase brahmanopyadikartre anant devesh jagannivasa tvam akshara sadasattatparam yat. Translation. O great one, greater than even Brahma, you are the original creator. Why then should they not offer their respectful obeisances unto you, O limitless one, God of gods, refuge of the universe? You are invincible source, the cause of all causes, transcendental to this material manifestation. आपको पता है जब अर्जुन ने भगवान को ओबेसेंसेस ऑफर किए और ये जो प्रेयर्स किए हैं, इसे हमें क्या टीचिंग मिल रही है? What is there for us to learn? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि by offering obeisances, Arjun indicates that Krishna is worshipable by everyone. He is all pervading and he is the soul of every soul. And Arjun is addressing Krishna as Mahatma, which means that Bhagwan is most magnanimous and unlimited. और आपको पता है अनंत का मतलब, अनंत का अर्थ क्या होता है? Ananta indicates that there is nothing which is not covered by influence and energy of Supreme Lord. And Devesha means he is controller of all demigods and is above them all. इन सब का अर्थ क्या है? इन सब का अर्थ ये है कि भगवान is the ultimate shelter of the whole universe. And Arjun also thought that it was fitting that all the perfect living entities and powerful demigods offer their respectful obeisances unto him because no one is greater than him. So that's why Arjun is saying all this word. And Srimad Bhagavatam में दिया गया है कि Lord is respected by Lord Shiva and Brahma and similarly other demigods. The word Aksharam is very significant because the material creation is subject to destruction, but Lord is above all this creation. So therefore Bhagwan is the supreme. Text 38. Tvamadi deva purusha purana stavamasya vishwasya param nidhanam vetasi vedyam cha param cha dham tvaya tatam vishwam ananta rupa. Hare Krishna. Sonu Kumar Singh, Mau Ghosh, Jyoti Rajput, Azoz Ek, Anu, Poonam Mehta, Sonu Kumar, Santosh Kumar, Sandeep Kumar, Deepti Kapoor, Haribol, रविदास, रीता पटेल, आप सभी का अभिनंदन है. हम इस वक्त वर्स 38 में हैं, चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म. जिनके पास भागवत गीता नहीं है कृपया vedabase.io पे जाइए. वहाँ पे सबसे पहली बुक भागवत गीता है, उस पर क्लिक करके आप चैप्टर 1 पे क्लिक करके यू कैन जॉइन अस टू हैव दिस रेसिटेशन. सो टेक्स्ट 38 पढ़ते हम. उसका ट्रांसलेशन है, यू आर द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, द ओल्डेस्ट एंड द अल्टीमेट सैंक्चुअरी ऑफ दिस मैनिफेस्टेड कॉस्मिक वर्ल्ड.
You are the knower of everything and you are all that is knowable. You are the supreme refuge above the material modes. O limitless form, the whole cosmic manifestation is pervaded by you. So भगवान इस तरह से transcendental है. He is the chief personality in the whole transcendental world. Spiritual material world सब भगवान के द्वारा ही है. And he is the chief. Text 39. वायुर्यामोऽग्निर्वाणुः शशाङ्खः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृतव पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते. अब अर्जुन भगवान को फर्दर प्रेयर्स में बोल रहे हैं कि यू आर द एयर, यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर, यू आर द फायर, यू आर द वाटर, यू आर द मून, you are the Brahma, the first living creature, and you are the great grandfather. I therefore offer my respectful obeisances unto you 1,000 times, again and yet again. So भगवान को यहाँ पर एयर क्यों बोला? क्योंकि भगवान, because air is the most important representation of the demigods, being pervasive. So इसलिए, और अर्जुन ने यहाँ पे भगवान को ग्रैंडफादर इसलिए बोला क्योंकि भगवान ब्रह्मा के फादर हैं, द फर्स्ट लिविंग क्रीचर इन द यूनिवर्स. टेक्स्ट 40. नमो पुरस्तदाथ पृष्ठतस्ते नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामिता विक्रमस्त्वं सर्वं समापस्नोषि ततो अस्मि सर्व. Obeisances to you from the front, from behind, and from all sides. O unbounded power, you are the master of limitless might. You are all pervading, and thus you are everything. So इन सभी वर्ड से अर्जुन की बहुत ही लविंग एक्सटेसी भगवान के लिए हम सबको सीखने के लिए मिल रही है. This is the way we offer obeisances and offer prayers. Arjun is accepting that Bhagwan is master of all potencies and everything, superior to all great warriors assembled in the battlefield. Text 41-42 are together, and the translation is, thinking of you as my friend, I have rashly addressed you, O Krishna, O Yadava, O my friend, not knowing your glories. Please forgive whatever I may have done in madness or in love. I have dishonored you many times, jesting as we relaxed, laying on the same bed or sat or ate together, sometimes alone and sometimes in front of many friends. O infallible one, please excuse me for all these offenses. So देखिए, अर्जुन को भगवान के साथ के बिताए हुए जितने भी पल हैं सब एकदम से फ्लैश हो रहे हैं आंखों के सामने से, और and he has accepted Bhagwan is the supreme personality, and so Arjun remembers his loving relationship with Bhagwan and is asking for forgiveness, pardon, and requesting Krishna to excuse him for many informal gestures which arise out of casual friendship, He is admitting, Arjun admit करता है कि पहले उसे पता नहीं था कि भगवान का इतना बड़ा विश्वरूप भी हो सकता है, जबकि भगवान ने एक्सप्लेन किया क्योंकि अर्जुन उसके बहुत इंटीमेट फ्रेंड हैं. लेकिन अर्जुन को पहले इस बात की नॉलेज नहीं थी और वो अपने दिल में फील कर रहा है कि मैंने भगवान को कितनी बार डिसऑनर किया बाय सेइंग ओ कृष्णा, ओ यादव, विदाउट एक्नॉलेजिंग कि भगवान के पास इतने सारे ऑप्युलेंसेस हैं. बट कृष्ण भगवान तो इतने काइंड हैं, इतने मर्सीफुल हैं, दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ऑप्युलेंसेस ही प्लेड अर्जुन एज अ फ्रेंड. एंड ये देखकर, ये एक्सचेंज देख के हमें ये पता चल रहा है कि these are the characteristics of transcendental loving relationship between Bhakt and Bhagwan. So the relationship between living entity and Bhagwan is fixed eternally. Prabhupada explain करते हैं, it cannot be forgotten. And as we can see from behavior of Arjun, although Arjun had seen opulence in the universal form, he cannot forget his friendly relationship with Krishna. Text 43. पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्सामो अस्ति अभ्याधिका कुतोऽन्यो लोकात्रय अपि अपरातिमा प्रभाव. अब अर्जुन भगवान को प्रेयर्स में क्या कहते हैं?
he says, you are the father of this cosmic complete manifestation of the moving and the non-moving. You are its worshipable chief, the supreme spiritual master. No one is greater than you, nor can anyone be one with you. How could there be anyone greater than you within the three worlds? O Lord of immeasurable power. उसने भगवान को बोला, Lord of immeasurable power. And we know Bhagwan is worshipable as a father, is worshipable for his son as a father. He is the spiritual master because he originally gave Vedic instructions to Brahma, and presently he is also instructing these beautiful teachings of Bhagavad Gita to Arjun. So, इसलिए भगवान original spiritual master है, and any bona fide spiritual master at the present moment must be in the parampara from Krishna to Arjun, in the line of disciplic succession. Without being a representative of Krishna, one cannot become a teacher or a spiritual master of transcendental subject matter. So it's very important we learn this science of self-realization. We learn this beautiful transcendental knowledge in parampara, not from some mundane speculators or scholars. It should be, this is the king of knowledge. This is the most confidential knowledge. This is the science of pure devotional service. And we should get it from the right source. So this is the importance. And भगवान को इस वक्त अर्जुन हैं जो वो obeisances कर रहे हैं in all respects. भगवान की इतनी greatness है, वो भगवान को glorify कर रहे हैं. So friends, we are now on text number 44, chapter 11, the universal form. I see some friends are still joining. आपका अभिनंदन है. सुमेश मंडल, यतेंद्र घोर, सुमन सरकार, सवित्री रामलोचन, हरे कृष्णा, किशन ठाकुर. आप सब अभी आए हैं. अभी हम वर्स 44 पे हैं. You can go to vedabase.io and open the first book, which is Bhagavad Gita as it is, and you can come to Chapter 11, text 44. We are reading Sanskrit and English. I'm making some brief comments so we have a better understanding what we are reading. This is Gita Jayanti month, and we should take the full opportunity to understand this beautiful, heartfelt knowledge of love and devotion, the science of devotional service, which Bhagwan has shared with Arjun in Gita. Text 44. Tasmat prananamya parnidhaya kayam prasadaye tvamahim shamingayam piteva putrasya sakheva sukhayo priya priyarhasi deva sodhum. Translation. You are the Supreme Lord to be worshipped by every living being. Thus I fall down to offer you my respectful obeisances and ask your mercy. As a father tolerates the impudence of his son, a friend the impertinence of a friend, or a husband and familiarity of his wife, please tolerate the wrongs I may have done you. So भगवान से अर्जुन पहले तो भगवान को प्रे कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भगवान के ब्यूटीफुल तो नहीं बोल सकते, बट बहुत ही मैग्नानिमस, इट्स अ वेरी एफल्जेंट विश्व रूप, द यूनिवर्सल फॉर्म को ऑ से, वंडर से देख रहे हैं. और उसके बाद अब भगवान से फॉरगिवनेस मांग रहे हैं फॉर टेकिंग भगवान लिटिल केयरलेसली इन अ मूड ऑफ फ्रेंड. और यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, कृष्णा's devotees relate to Krishna in various relationships. One might treat Krishna as a son, or one might treat Krishna as a husband or a friend or as a master. And Krishna and Arjun are related in a friendship as the father tolerates or the husband or master tolerates. So भगवान भी हम सबको tolerate करते हैं. Text 45. After seeing this universal form, which I have never seen before, I am gladdened, but at the same time my mind is disturbed with fear. Therefore, please bestow your grace upon me and reveal again your form as the personality of Godhead, O Lord of the Lords, O abode of the universe. So Arjun ने भगवान को express किया कि he is very gladdened to see Bhagwan's universal form, but now he is very disturbed with fear. So अब भगवान से कृपा चाहता है और बोल रहा है, please bestow your mercy on me and please show me your form
जिसमें आपको मैं रियलाइज कर सकूं, O Lord of Lords, O abode of the universe. Now Arjun is always in confidence with Bhagwan because he is a very dear friend. And एक dear friend अपने innermost true thoughts express करता है एक दूसरे से. So भगवान को express करता है. And Arjun is very joyful to see that his friend Krishna is the supreme Bhagwan and can show such wonderful universal form. But at the same time, what does he say? After seeing that universal form, he is afraid that he has committed so many offenses to Krishna because of his unalloyed friendship. So इसलिए उसका mind disturbed है out of fear. Though Arjun तो बहुत बड़ा warrior है, he is very strong. He is a great warrior. He doesn't have any reason to fear. He can. So he is asking Bhagwan to show his Narayan form because Bhagwan can take any form, right? So this यूनिवर्सल फॉर्म प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, ये यूनिवर्सल फॉर्म जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ टेम्पररी एंड मटीरियल, एंड एज मटीरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी, बट इन वैकुंठ प्लैनेट्स ही हैज़ हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म विद 4 hands एज नारायण, एंड देर आर इन्यूमरेबल प्लैनेट्स इन द स्पिरिचुअल स्काई जिसमें भगवान के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं विद डिफरेंट नेम्स. So Arjun desired to see one of the forms of Krishna in these Vaikunt planets. And so we know that in Vaikunt planets, Bhagwan is present as Narayan with 4-handed form. And Bhagwan के 4 hands में वो क्या hold करते हैं? Please comment. Let me see if any of you can determine correctly. Bhagwan Narayan के 4 hands में what are the different things? What are the symbols? Okay. Now, according to different hands, the 4 things are held in Narayans are variously named, and all of these forms are one with Krishna. Therefore, Arjun requests to see his 4-handed feature. Text 46. O universal form, O 1,000-armed Lord, I wish to see you in your 4-armed form with helmeted head and with club, wheel, conch, lotus flower in your hands. I long to see you in that form. So Arjun ने express किया, he longs to see now the 4-armed form holding these things. What are the things? Club, wheel, conch and lotus flower. So here now we come to text number 47. For those of you who are still joining, Sumesh Hare Krishna, Yatendra Hare Krishna, Kishan, Sojal, Hare Krishna friends, Rajni, Dashra, Ashwini Kumar, Abhishek Gupta, Hare Krishna friends, Rohini Samal. So we are reading chapter 11, the universal form of Bhagwan, and we are on text 47. There are about, I think 52 or 54 verses. We'll be soon ending this chapter. This was a very big chapter, and there is a beautiful lesson to learn which I will be shortly sharing with you all. The Supreme Personality of Godhead said, so Arjun has been praying to Bhagwan when he is so wonderstruck and he is also having some fear in his heart. So now Bhagwan is answering him. The Supreme Personality of Godhead said, my dear Arjun, happily have I shown you by my internal potency this supreme universal form within the material world. No one before you has ever seen this primal form, unlimited and full of glaring effulgence. So Bhagwan, because out of his causeless mercy, he has shown his devotee Arjun the universal form full of effulgence and opulence. एंड आपने एक बात का ध्यान दिया होगा कि भगवान का जो ये फॉर्म था वो बहुत ही ग्लेयरिंग था, लाइक सन, एंड इट्स मैनी फेसेस वर रैपिडली चेंजिंग, एंड कृष्णा शोड दिस फॉर्म टू सेटिस्फाई द डिज़ायर ऑफ हिज फ्रेंड अर्जुन. एंड भगवान ने ये जो फॉर्म दिखाया, इट इज़ अ टोटल इनकंसीवेबल फॉर्म. सो कोई nobody can speculate about it. No one has ever seen this form of Bhagwan before, but because this form was shown to Arjun, other devotees in other heavenly planets and in other planets in outer space could also see it. They had not seen it before, but because of Arjun, they were able to see it. In other words, all the disciplic devotees, Prabhupada explain करते हैं कि जितने भी disciplic devotees हैं भगवान के, they could see the universal form which was shown to Arjun by mercy of Krishna.
Someone has commented that this form was shown to Duryodhan also when Krishna went to Duryodhan to negotiate for peace. तो प्रभुपाद बोलते हैं, unfortunately Duryodhan did not accept the peace offer, but at that time Krishna manifested some of his universal forms, but those forms are different from this form which was shown to Arjun. And it is clearly said no one had ever seen this form before. Text 48. O best of Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of mine, for neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charity, nor by pious activities, nor by severe penances, can I be seen in this form in the material world. तो अब देखिए भगवान का जो डिवाइन फॉर्म है, ठीक है, भगवान का जो यूनिवर्सल फॉर्म है, भगवान ने केवल अर्जुन को डिवाइन विजन दिया ताकि अर्जुन वो फॉर्म देख सके. और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हु कैन हैव दिस डिवाइन विजन? Divine means godly. So unless one attains the status of divinity as a demigod, he cannot have a divine vision. And who is a demigod? It is stated in Vedic scripture that those who are devotees of Bhagwan Vishnu are demigods. And those who are Nastic, atheistic, who do not believe in Vishnu or who recognize only the impersonal part of Krishna as supreme cannot have the divine vision. And they cannot understand. One cannot have divine vision without becoming divine. In other words, those who have divine vision can also see like Arjun. तो देखिए अब इस चैप्टर में भगवत गीता के डिस्क्रिप्शन है पूरा यूनिवर्सल फॉर्म का. ओके, एंड नाउ वी आर कमिंग टू verse number 49. You have been perturbed and bewildered by seeing this horrible feature of mine. Now let it be finished. My devotee, be free again from all disturbances. With a peaceful mind, you can now see the form you desire. So you see, अर्जुन ने एक्सप्रेस किया भगवान को, पहले तो यूनिवर्सल फॉर्म देखना चाहते हैं, भगवान ने यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया. देन अर्जुन बिकेम लिटिल fearful. He is realizing how in different ways he might have committed offense towards Krishna, being in a friendly relationship. उसके बाद अर्जुन ने एक्सप्रेस किया, प्लीज शो मी योर 4-armed फॉर्म विच इज इन वैकुंठ प्लैनेट्स. और उसके बाद श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि डिवोटी इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन यूनिवर्सल फॉर्म, फॉर इट डज नॉट एनेबल वन टू reciprocate loving feelings. Either a devotee wants to offer his respectful, worshipful feelings, or he wants to see the two-handed form of Krishna so that he can reciprocate in loving exchange, loving service with Bhagwan. Text 50. अब संजय धृतराष्ट्र से क्या बोल रहे हैं? Sanjay said to Dhritarashtra, the Supreme Personality of Godhead Krishna, having spoken thus to Arjun, displayed his real 4-armed form and thus at last showed his 2-armed form, thus encouraging fearful Arjun. So भगवान ने पहले 4-armed form दिखाया यूनिवर्सल फॉर्म के बाद, उसके बाद 2-armed form दिखाया, because he wants to remove fear from the heart of his dear devotee, dear friend Arjun. और इससे क्या हुआ? भगवान banished the fear from the heart of Arjun, his devotee, and showed him again his beautiful form of Krishna. And Prabhupada यहाँ बोलते हैं कि a person whose eyes are smeared with ointment of love can see beautiful form of Krishna. और वो ointment of love आंखों पे कब चढ़ता है? जब हम भक्ति में engage होते हैं. अर्जुन उवाच दृष्टत्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गत. When Arjun thus saw Krishna in his original form, he said, O Janardhan, seeing this human-like form so very beautiful, I am now composed in mind and I am restored to my original nature. So Arjun calms down after seeing Bhagwan's form. क्योंकि a pure devotee is not confused by misguided commentaries on Gita because he knows what is what. So एक बात समझने की है बहुत ध्यान से. भागवत गीता में बहुत क्लियरली बोला गया है कि one who thinks that Krishna is an ordinary person and who misguides the reader by claiming
that it is the impersonal Brahman with Krishna speaking is doing the greatest injustice. Krishna has actually shown his universal form and his four-handed Vishnu form, so how can he be an ordinary human being? So the original verses of Bhagavad Gita are as clear as the sun. They do not require lamplight from foolish commentators. See? So we are coming to text 52 now. We have 3 more verses to go before we finish this chapter 11. Chapter 11 बहुत ही बड़ा था. इसमें हम भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म के फीचर्स हमने पढ़े और हमने ये भी देखा कि अर्जुन के क्या रियलाइजेशंस थे, अर्जुन ने भगवान से कैसे प्रेयर्स की, अर्जुन ने अपने भाव कैसे भगवान से शेयर किए. और भगवान तो भावग्रही जनार्दन है. भगवान अर्जुन के दिल के भाव को समझते हैं, भगवान भक्तों के भाव समझते हैं. तो भगवान ने भी अर्जुन को फिर इवेंचुअली 4 आर्म्ड और 2 आर्म्ड फॉर्म दिखाए. श्री भगवान उवाच. टेक्स्ट 52. सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणा. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjun, this form of mine you are now seeing is very difficult to behold. Even the demigods are ever seeking the opportunity to see this form which is so dear." तो भगवान ने 48 वर्स जो पहले थी चैप्टर में, उसमें भगवान ने कंक्लूड किया था कि हिज यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में एंड इन्फॉर्म्ड अर्जुन दैट हिज फॉर्म इज नॉट पॉसिबल टू बी सीन बाय even after so many people when they do all kind of charities and pious activities. अब यहाँ भगवान बता रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान का 2-handed फॉर्म और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है. One may be able to see the universal form of Krishna by adding a little tinge of devotional service to the various activities, right? Like penances, Vedic study, and speculation. It may be possible. But without a tinge of bhakti, one cannot see. That has already been explained. But still beyond the universal form, भगवान के 2-hand form को देखना और भी difficult है. Even for Devi Devtas like Brahma and Shiva, they desire to see him, and we have the evidence in Srimad Bhagavatam. जब उनका जन्म जेल में हुआ था, देवकी और वासुदेव के साथ में थे. So he was supposed to be in the womb of his mother Devaki, and all the demigods from heaven, they came to see the marvel of Krishna. भगवान के जन्म के समय वो आए थे और उन्होंने सभी देवी देवताओं ने स्तुति की थी. So they wanted to see him, but he was not visible to them. A foolish person may deride him thinking an ordinary person, and may offer respect not to him but to impersonal something about him. But these are all nonsensical postures. Krishna in his 2-arm form is actually desired to be seen by demigods like Brahma and Shiva. So बहुत रेयर है. भगवान का जो 2-arm form जो है बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है. उसके लिए शुद्ध भक्ति चाहिए. The conclusion is that although to see universal form of Krishna is very, very difficult and is not possible for anyone and everyone, it is still more difficult to understand his personal form as Shyam Sundar. Text 53. We have 2 more verses to go. The form you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Vedas, nor by undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship. It is not by these means that one can see me as I am. So how can one understand Krishna? See, we have been doing all these different chapters, knowledge of the absolute, the transcendental knowledge, Karma Yoga, Dhyan Yoga, most confidential knowledge, and then we did all the divine manifestations and opulences of Bhagwan. What is the key thing in all these chapters? Have you paid attention? Bhagwan can be understood by who? Only, and how? Bhagwan can be understood only by the devotees, by the process of devotional service. ये भगवान खुद बार बार अर्जुन को इंडिकेट कर रहे हैं. और अब ये सबसे प्राइम और कीवर्ड्स में देखिए भगवान क्या कहते हैं. Text 54, chapter 11. This is the last verse, friends. Please pay attention. Bhaktya tva ananya shakya
अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं दृष्ट्वा च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अब भगवान ने अर्जुन को बोला, माय डियर अर्जुन, ओनली बाय अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस can I be understood as I am, standing before you, and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mysteries of my understanding. So, Srila Prabhupada कहते हैं, Krishna can be understood only by the process of undivided devotional service, unmotivated devotional service, unalloyed devotional service, Shuddha Bhakti. And he explicitly explained this in the verse so that unauthorized commentators who try to understand Bhagavad Gita by speculative process will know that they are simply wasting their time. No one can understand Krishna and how he came from parents in a 400 form and at once change himself into 200 form. These things are very difficult to understand by study of Vedas or philosophical speculation. इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि नो वन कैन सी हिम और अंडरस्टैंड इन और एंटर इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज मैटर्स, बट दोज हु हाउएवर आर वेरी एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स ऑफ वैदिक लिटरेचर कैन लर्न अबाउट हिम फ्रॉम वैदिक लिटरेचर इन सो मेनी वेज, राइट? सो एज लोग चैरिटीज भी करते हैं, लोग बहुत कुछ करते हैं, ऑस्टेरिटीज एंड पेनेंसेस कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं, कहते हैं कि as far as charity is concerned, it is plain that charity should be given to devotees of Krishna who are engaged in devotional service to spread the Krishna conscious philosophy or Krishna consciousness throughout the world. So bhakti is a blessing for the whole humanity. और जो लॉर्ड चैतन्य जब आए थे ना, who is लॉर्ड चैतन्य? वो तो भगवान का अवतार हैं, वो आए थे आज से करीब 500 years back. तो लॉर्ड चैतन्य ने क्या बोला? He was appreciated by Rupa Goswami. ये रूपा गोस्वामी हमारे स्पिरिचुअल टीचर हैं. As he, so Lord Chaitanya was appreciated by Rupa Goswami as the most munificent man of charity because उन्होंने क्या दिया सारी ह्यूमैनिटी को? लव ऑफ कृष्णा दिया. उन्होंने हरे कृष्णा मंत्रा दिया, खुले हाथों से सबको दिया, which is very difficult to achieve. And it was distributed freely by him. So if one gives some amount of money to the persons involved in distributing Krishna consciousness, that charity given to spread Krishna consciousness is the greatest charity in the world. इसलिए आप देखिए जो पूरी ड्राइव होती है ना, लिव टू गिव मैराथन, भागवत गीता मैराथन, गीता जयंती मैराथन, और ये पूरा जो शास्त्र इनकी प्रिंटिंग जो चलती है, so that more and more people can get a copy and they can read it or they can study it and they can benefit of it. इस पूरे उससे किसको क्या फायदा हो रहा है? So many souls are learning about Krishna more and more, and they are developing the desire to serve Krishna, and they are coming closer to Krishna. So one who helps in this process, right, by giving some charity for spreading of such beautiful knowledge, that is the best charity. That's what Prabhupada is explaining here. उन्होंने ये भी बताया है कि if one worships as prescribed in the temple, that is a chance to progress by offering worship and respect to Bhagwan. For the beginners in devotional service to Bhagwan, temple worship is necessary, right? मंदिर में जाके हम prayers करते हैं, we feel connected to Bhagwan and we share our inner thoughts and feelings. That is also spiritual advancement. So one who has unflinching devotion to Supreme Lord and is directed by spiritual master, a genuine guru, in whom he has similar faith, unflinching faith, can see Supreme Personality of Godhead by revelation. One cannot understand Krishna by mental speculation. For one who does not take personal training under the guidance of a bona fide spiritual master, it is impossible to begin to understand Krishna. तो भगवान को सर्व करना है अगर, और भगवान को अगर प्लीज़ करना है, तो हमें थोड़ा तो समझना पड़ेगा भगवान को. अगर हम किसी लव्ड वन को ध्यान रखते हैं, उनका केयर करते हैं, तो हम ये भी ध्यान देते हैं कि उनको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द वेज वी ट्राई टू टेक केयर ऑफ समवन. सो यहाँ पर भगवान का पर्सनल फॉर्म्स हैं, 200 फॉर्म, 400 फॉर्म,
एंड जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं सुदुर्दशम, मीन्स दे आर वेरी डिफिकल्ट टू सी. Okay, and these are very different than the universal form which was shown to Arjun initially. यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने ये मेंशन किया है कि जो 2 आर्म्ड और 4 आर्म्ड फॉर्म है ना भगवान के, जो अर्जुन को इवेंचुअली उन्होंने दर्शन में दिखाए, so these forms are eternal and transcendental, whereas the universal form exhibited to Arjun is temporary. इन सब से क्या इंडिकेट होता है? व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम इट? दिस इंडिकेट्स दैट 4-handed form and other forms mentioned in Vedic literature are all emanations. They are emanations from original 2-handed form of Bhagwan. Bhagwan is the origin of all emanations, and Krishna is distinct even from these forms. What to speak of impersonal conceptions? If you read the purports are really big, and I try to highlight the main message in some of the purports. Okay, so now we are coming towards the end of the purport of this last verse, and it is very apparent that अर्जुन ने जब भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म को देखा, उसके बाद दिल में फियर आ गया. लेकिन भगवान यहाँ पे शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं इन टीचिंग्स के बारे में कि यूनिवर्सल फॉर्म इज नॉट अट्रैक्टिव फॉर प्योर डिवोटीज हु आर इन लव विद भगवान इन डिफरेंट ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप. द सुप्रीम Godhead exchanges transcendental love in his original form of Krishna. Therefore, to Arjun, who is so intimately related with Krishna in Sakha Bhav, in mood of friendship, this form of universal manifestation was not pleasing. Rather, it was fearful. Arjun, who was a constant companion of Krishna, must have had transcendental eyes. He was not an ordinary man. Therefore, he was not captivated by universal form. So, ultimate conclusion and the lesson up to here is that persons who are engaged in bhakti, the two-handed form of Krishna is most dear. I thought verse 54 is the last, but there is another verse. So we have verse 55 also. And this verse 55 says, Bhagwan ne end mein Arjun ko kaha, my dear Arjun, he who engages in my pure devotional service, free from contaminations of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. So what is the characteristic of person who is very dear to Krishna? We have a whole chapter 12 on this. We are coming to it. But यहाँ पे highlight कर दिया भगवान ने, बता दिया कि anyone who wants to approach the supreme of all personalities, Bhagwan Krishna, who wants to attain the supreme, what is the supreme? The Goloka, Bhagwan's love. So one who wants to be on the Krishna Loka planet in spiritual sky and be intimately connected with Supreme Krishna must take to this formula. ये formula क्या है? And therefore this verse is considered to be the essence of the entire Bhagavad Gita. पूरे Bhagavad Gita का essence. देखिए भगवान पहले confidential knowledge बता रहे हैं chapter 2 and 3 में. Chapter 7 और 8 में more confidential knowledge बता रहे हैं. Chapter 9 में most confidential knowledge बता रहे हैं. फिर chapter 10 में भगवान opulences और manifestations बता रहे हैं, which is even more wonderful than most confidential knowledge. अब यहाँ पे शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पूरे भगवद गीता का एसेंस ही यही है कि one has to follow this formula of serving Krishna. One should do his activities to please Krishna. This is the ultimate formula and essence of Bhagavad Gita, to surrender to Bhagwan. The Bhagavad Gita book जो है, शिला प्रभुपाद कहते हैं, this is a book directed for conditioned souls who are engaged in material world with the purpose of enjoying everything, trying to be proprietor of everything, and who do not know what is real spiritual life. So with Bhagavad Gita we can understand about our spiritual existence and our relationship with Bhagwan, and it teaches us how to go back home, back to Godhead. We are here for a temporary time. You must have heard of the saying that, you know, we are humans having spiritual experience, but actually हमारे वैष्णव आचार्यस बोलते हैं we are all spiritual beings having human experience.
सो इस वर्स में ये बताया गया है, प्रोसेस बताया गया है by which we can attain success in his spiritual activity, devotional service. और जैसे कि towards the end प्योर डिवोशनल सर्विस पे आ रहा है, अनन्य भक्ति पे पॉइंट आ रहा है, बिकॉज ये जो भक्ति होती है ना, ये मिक्स्ड भी होती है और अनएलॉयड भी होती है। अनन्य भक्ति जो कि शुद्ध भक्ति, जिसमें हमारा कुछ एजेंडा नहीं होना चाहिए। लोग देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल हु कम टू कृष्णा, राइट? A person who is in distress, a person who wants wealth, a person who wants knowledge. इसी तरह there is another category. So people have different agendas, right? ये सब आते हैं, वो भक्ति भी है कि भगवान के पास आए, लेकिन one who comes to Krishna just to please Krishna without any motive, just for serving Krishna, that is engaging in Ananya Bhakti. No work should be done by any man except in relationship to Krishna. This is called Krishna Karma. One may be engaged in various activities, but one should not be attached to the result of his work. The result should be done only for him. So, how can one do that? If you are doing a business, you should try to see how your business can help spread the word of God, right? अभी अगले चैप्टर 12 में हम पढ़ेंगे कि भक्ति की भी एक लैडर होती है, लाइक स्टेजेस होती हैं, राइट? तो डिफरेंट, अगर कोई 24/7 भगवान के ऊपर मेडिटेट नहीं कर सकता, तो फिर रिकमेंडेशन है ऐसे पर्सन को फिर क्या करना चाहिए, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए, क्या उसको अपने जो फ्रूटिव एक्टिविटीज़ में कम एंगेज होकर अपना जो हर चीज़ का क्रेडिट है या फल है वो कैसे भगवान को ऑफर कर देना चाहिए। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो किस तरीके से आपको ऐसे भक्तों को हेल्प करना चाहिए जो भगवान का नाम का प्रचार कर रहे हैं या भगवान की नॉलेज सबसे शेयर कर रहे हैं। इन दिस वे इनडायरेक्टली पीपल कैन एंगेज इन भक्ति, येट दे कैन प्यूरिफाई ग्रेजुअली एंड कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। सो फ्रेंड्स, there are some beautiful messages in this last purport. I request you all to please read carefully this last purport. Prabhupada ने कहा है कि a Krishna conscious person knows that if a man is suffering, it is due to his forgetfulness of his eternal relationship with the Krishna. Therefore, highest benefit one can render to the human society is helping your neighbor from all material problems. In such a way, a pure devotee is engaged in service of the Lord. Now, we can imagine how merciful Krishna is to those engaged in his service, risking everything for him. Therefore, it is certain that such persons must reach the supreme planet after leaving the body. So, आप देखिए जो पूरा चैप्टर है अटेनिंग द सुप्रीम, और उसमें मेंशन था अंतकाले, एट द मोमेंट ऑफ डेथ, वन हु थिंक्स ऑफ कृष्णा ही अटेन्स दैट स्टेट। एंड सो इस तरीके से हमें अपने लाइफ की एक्टिविटीज़ इस तरह से करनी है कि वी ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड वी नेवर फॉरगेट कृष्णा। सो ये जो चैप्टर था पूरा ऑन यूनिवर्सल फॉर्म, देर आर फ्यू की पॉइंट्स। वी अंडरस्टैंड यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कृष्णा इज अ टेम्पररी मैनिफेस्टेशन एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ टाइम दैट डिवोर्स एवरीथिंग। एंड इवन द फॉर्म ऑफ विष्णु, द 4-handed form, have been exhibited by Krishna. So Krishna is the origin of all these manifestations, the 4-arm form, the universal form, and it is not that Krishna is a manifestation of the Vishrup. भगवान का 2-arm form manifestation नहीं है, बल्कि उनके उस फॉर्म से बाकी फॉर्म्स निकले हैं। Krishna is the origin of all forms, and there are hundreds and thousands of Vishnus. Prabhupada explain करते हैं, but for a devotee, no form of Krishna is important but the original form, the 2-handed Shyam Sundar form. In Brahma Samhita it is stated that those who are attached to Shyam Sundar form of Bhagwan, what happens to them? They are in love and devotion with the Lord, in trying to please him, to serve him, and they see him always within the heart and cannot see anything else. And one should understand therefore, what is the purport of this chapter? That the form of Krishna, Shyam Sundar form, 2-arm form, is essential and supreme. This ends the 11th chapter today. I hope everyone really enjoyed going through the variations in the chapter and the final message.
रोहिणी समाल, हरे कृष्णा. रजनी अरोड़ा, अभिषेक गुप्ता, अश्विनी कुमार वर्मा, हरि बोल. दशरा मंजुनाथ, Hare Krishna. I guess many are still joining. We just finished reading the chapter 11. Vinod, Vinu, Deepak Singh. अगर आपको कोई questions हैं, you can mention here right now. I may take few questions in next 5 minutes. Preeti Mukesh Bijwan, Deepak Singh, Raghavendra Rao, Anjali Mishra, Vimla Rakesh, Gopal, Robi, Kenneth, Krishna, Indra, Shweta, Hari Bol, Piyush, देवानंद, ज्ञानचंद, सोनी, नेहा, ठक्कर, जयमिन, लीला, वटी गौतम, SK चरण. हरि बोल. Thank you so much for being there with me for the Bhagavad Gita recitation. Pankaj Sahu, Khushi Talreja. So next time we will be doing chapter 12. It is one of the very important chapters in Bhagavad Gita. It is called Bhakti Yoga, yeah, devotional service. उसमें 20 वर्सेस हैं और बहुत सी बार बच्चों के कॉन्टेस्ट होते हैं गीता जयंती पे और बच्चों को बोला जाता है चैप्टर 12 की सारी 20 वर्सेस बच्चे मेमोराइज कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं. दे आर रियली ब्यूटीफुल वर्सेस. सो व्हेन वी डू द रेसिटेशन टुमारो, होपफुली कृष्णा विलिंग, we will see how Bhagwan is going to explain to Arjun. Okay, अर्जुन इज गोइंग टू आस्क भगवान कि सबसे परफेक्ट कौन होते हैं जो सारा समय डिवोशनल सर्विस करते हैं कि जो इम्पर्सनल मायावा तरीके से ब्राह्मण पे मेडिटेट करते हैं. फिर भगवान अर्जुन को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट तरीके से लोग भगवान की भक्ति में एंगेज होते हैं. पर भगवान ने बहुत ही ब्यूटीफुल 8 वर्सेस बोली हैं जिसमें भगवान को कौन सबसे डियर होते हैं उस पर बहुत ब्यूटीफुल टीचिंग्स हैं. So please do not miss that, and I hope everyone is trying to meditate and introspect and reflect on these teachings. आप सब जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली से. और अगर आपके पास में भगवद गीता हैं कॉपीज़ या नहीं हैं तो प्लीज़ go to vedabase.io and try to read from there. And if you can sponsor for Bhagavad Gita boxes, we see a lot of posts on this group as well and elsewhere also. Please try to help out in this noble cause, because जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा, whoever engages in bhakti directly or indirectly gets the benefit, and that benefit is eternal, and it brings us closer to Bhagwan. It brings us closer to love and blessings of Bhagwan. जब हमें भगवान की ब्लेसिंग्स और लव अपने हार्ट में फील होगा तभी हम दूसरों से भी शेयर कर पाएंगे. देयर इज अ मच हायर मीनिंग टू दिस ह्यूमन एग्जिस्टेंस दैन जस्ट ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग. तो जब हम इन स्क्रिप्चर्स को बहुत ही फेथ और सरेंडर्ड मूड में पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डिवोटी, ये रीडिंग हम श्रीला प्रभुपाद जैसे प्योर डिवोटी की हेल्प से पढ़ रहे हैं. दिस इज अवर सच अ ग्रेट फॉर्च्यून. सो फ्रेंड्स, I hope this was useful, and so now looking forward to chapter 12 tomorrow. Have a wonderful evening, have a wonderful day in Krishna consciousness. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavad Pad ki jai, Anant Koti Vaishnav Vrind ki jai. Hare Krishna.